I am Swami Pyari, Assistant Teacher, GIC Agra. Today we will study about the poem The Psalm of Life by H W Longfellow. Now let us know a little about Longfellow. He was born in February 1807, Portland, United States, and died in March 1882, Cambridge, United States. His famous poems are The Song of Hiawatha, Evangeline, The Psalm of Life, Paul Revere Wright. Now today we will talk about his beautiful poem, The Psalm of Life. Basically this poem consists of 9 stanzas, but in course of 10th class there is only 4 stanzas. Now let's recite the poem first. Poem begins with the line, Life is real, life is earnest, and the grave is not its goal. Dust thou art, to dust returnest, was not spoken of the soul. Not enjoyment, not sorrow, is our destined end or way, but to act that each tomorrow find us farther than today. In the world's broad field of battle, in the bivouac of life, be not like drum-driven cattle, be a hero in the strife. Let us then be up and doing, with the heart for any fate, still achieving, still pursuing, learn to labor and to wait. It is a didactic poem, which means the poem full of teaching or which gives us some message, or we can say in other words that this is a moral poem. Now let us start with the explanation of the poem. Best of luck to you all. Today we will talk about the poem Psalm of Life. It is composed by H W Longfellow. His full name is Henry Wadsworth Longfellow. Now before we read this poem, we should know something about a great American poet, H W Longfellow. The main 2 things always present in his poetry. The first is a great element of rhyming. Means when we read his poems, it seems that the birds are singing. इतनी अच्छी राइमिंग स्कीम उनकी पोएम में है कि जब भी हम उनकी पोएम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि बर्ड्स गा रहे हैं. The second thing, all his poems have optimism approach. Optimism means when we see life with a positive attitude, right? And he hates negativity and he hates negative people. We will see in his poem this, right? Now let's start with the poem Psalm of Life. Please don't get confused when we say this word Psalm. The spelling is P-S-A-L-M, but P and L, they both are silent letters. That is why we call it Psalm, Psalm of Life. Now what is the meaning of this word Psalm? Have you ever heard about this? No? Okay, what is the meaning of this word Psalm? Have you heard about Christianity? They have their sacred book named Bible. In Bible, the spiritual songs are written. Those songs are known as Psalm. So it means spiritual songs. Okay, spiritual song. But here in the poem, this meaning is Song of Life. Okay? H W Longfellow will tell us about life and how we should live our life. Now today, let's start with the great poem Psalm of Life. His first stanza, the poem starts with, Life is real, life is earnest, and the grave is not its goal. Dust, thou art to dust returnest, was not spoken of the soul. The very first line is, life is real. He says, कि जो life है, ये real है, and it is very serious. Life is earnest. Earnest means जो serious है. We should not take it lightly. It is given us once and we should live our life very nicely because it is very meaningful and it is priceless. ऐसा नहीं है कि life हमें रोज रोज मिल रही है, ठीक है? हमें life मिली है और इसको हमें बहुत positively जीना है. Then, and the grave is not its goal. Grave is where the dead bodies are buried. Here we can say the grave is death. Death is not our goal. ऐसा नहीं है कि बिकॉज हमने जन्म लिया है तो बस हमें मरना ही है, ऐसा नहीं है. ठीक है, although we know that
डेथ कैन नॉट बी अवॉइडेड. ऐसा अवॉइड तो हो नहीं सकती डेथ. अगर हमने जन्म लिया है तो डेथ तो एक दिन होनी ही है. बट स्टिल we should never afraid of it and we should never think of it again and again. Dust thou art to dust returnest was not spoken of the soul. इसका क्या मतलब है? Dust thou art to dust returnest. We know that our body is made up of dust. कहते ना हम हिंदी में कि मिट्टी से बने हैं, मिट्टी में मिल जाना है. ठीक, लेकिन Longfellow is saying these words are said for our body, our physical body. They are not applicable on the soul. Soul जो रूह है, आत्मा है, उस पर ये words applicable नहीं है. Because soul क्या है? Soul तो immortal है, अमर है. आत्मा तो अमर है ना. It is immortal. It cannot die. But body will die one day. So we should never think कि हमें तो मर जाना है. Because जो हमारे good works हैं, लॉन्गफेलो ने ये भी कहा है, बिकॉज हमारी जो सोल है इट इज इमोर्टल. इन द सेम वे द वर्क्स विच वी डू टुडे दे विल बी रिमेम्बर्ड एवरी टाइम. एज टुडे लॉन्गफेलो इज नॉट बिटवीन अस, ही इज नो मोर, ही इज नॉट लाइव, बट टुडे ऑल्सो वी आर टॉकिंग अबाउट हिम एंड ही इज फेमस. व्हाई? हाउ कम? ओनली बिकॉज ऑफ द वर्क्स विच ही हैड डन. ठीक है, बहुत अच्छी उन्होंने पोएट्री लिखी, लाइफ के बारे में हमें बताया, हाउ वी शुड लिव लाइफ, व्हाट काइंड ऑफ अप्रोच वी शुड हैव. इसीलिए आज भी वी आर टॉकिंग अबाउट हिम. ठीक है, हम उनको याद कर रहे हैं. तो यही वो बोल रहे हैं कि आवर वर्क दे विल रिमेन रिमेम्बर्ड. नाउ द सेकेंड स्टैंजा, इट्स ऑल अबाउट द आइडियल वे ऑफ लिविंग. लाइक ही सेज, नॉट एंजॉयमेंट नॉट सोरो इज आवर डेस्टिन्ड एंड और वे, but to act each tomorrow find us farther than today. Not enjoyment and not sorrow is our destined end or way. Means he is saying that the goal of life, it should not be enjoyment or sorrow. Means he says that in everybody's life, these both things are, they should be in balanced way. बहुत बार ऐसा होता है कि वी पीपल वी ऑलवेज सी फॉर आवर डिफिकल्टीज. हम हमेशा अपनी परेशानियों को देखते हैं, डिफिकल्टीज को देखते हैं, बट वी नेवर लुक फॉर द अपॉर्चुनिटीज वी हैव. लाइक हम सुनते हैं ना कि भगवान सबको सब कुछ देता है, तो इसका क्या मतलब है? ऐसा नहीं है दैट द गॉड हैज गिवन अस ओनली डिफिकल्टीज एंड सॉरो इन आवर लाइफ. देयर आर लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस एंड द मोमेंट्स ऑफ जॉय, बट वी इग्नोर देम बिकॉज वी आर फुल ऑफ पैसिमिज्म. ऐसा हमें नहीं करना है. He says that we should live the ideal way of living. And ideal way of living क्या होता है? जिसमें happiness and sorrow दोनों ही चीजें they are there in the balanced way. दोनों ही चीजें balanced way में होती हैं. ठीक? And he says, but to act that each tomorrow find us farther than today. Our goal should be a better person each and every day. Our today should be better than yesterday. Our tomorrow should be better than today. आज हम जो कर रहे हैं हमें कल उससे भी अच्छा करना है. कल जो हमने किया था हमें आज उससे भी अच्छा करना है. क्या मतलब है? That each and every moment of our life, each and every passing day, we should become better and better person. We should become better learned person, better mannered person. ठीक? तो इस स्टैंजा में हमने क्या देखा कि हमें हर दिन अच्छा बनना है. पुरानी चीजों को, जो गलतियां हुई या जो हमारे पीछे के टाइम में डिफिकल्टीज थी, उनको अपनी लाइफ में ऑब्स्टेकल नहीं बनाना, उनको अपनी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं बनाना जिसकी वजह से हम आगे मूव नहीं कर पा रहे. दिस वी शुड नॉट डू. नाउ इन द नेक्स्ट स्टैंजा, इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इन द बायोवेक ऑफ लाइफ, बी नॉट लाइक डम driven cattle, be a hero in this strife. Now he says he has compared the life of the battlefield. Battlefield, you know, जहाँ पे लड़ाई होती है, battlefield है ना. अब battlefield को उन्होंने compare किया है इस life से, and he says that we all are like soldiers. Like the soldiers are battling in the battlefield, in the same way we should also battle. Battle का मतलब we should also fight for a good cause के लिए लड़ना है, and in a better way, and we should always win. We should fight bravely.
ब्रेवली लड़ने का क्या मतलब है कि हमें करेज हमें होना चाहिए एंड वी शुड फाइट विद द करेज एटीट्यूड. ठीक. Then he says, be not like dumb, driven cattle, be a hero in the strife. मतलब we should not be like a dumb cattle. Cattle पता क्या होती है? cattle का जो झुंड होता है जानवरों का, गाय भैंसों का, उनको क्या करते हैं? कोई भी चरा लेता है, जहां उनको बोलते हैं वहीं वो चली जाती हैं. तो उनके पास अपना तो माइंड नहीं है ना कि हमको इधर जाना है कि उधर जाना है, ना उनको अपना कोई लाइफ में उनका गोल होता है. In the same way he is saying we should not be like dumb cattle, जिनका कोई लाइफ का गोल ही नहीं है, जहां पे उनको मूव कर लो उनका कोई डायरेक्शन ही नहीं है, वहीं वो मूव हो जाती है. We should have our definite goal in life and we should work accordingly to attain a destined goal. जो हमारा गोल है उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना है, रिक्वेस्टली काम करना है, जो so that we can achieve that goal. ठीक. Be a hero in the strife. Be a hero means we should fight with courage, that we have understood, but be a hero, we should always win our battle with a positive attitude and be a hero in our life. So in the last stanza, let us then be up and doing, with the heart of any fate, still pursuing, still achieving, learn to labor and to wait. What does it mean? Now, he is concluding his poem by saying that we should not waste our time and we should wake up and start working and always ready whatever comes in our future, whatever comes in our way. He is saying that we should be ready for any kind of fate that comes through. मतलब ऐसा हमेशा तो नहीं होता कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं और हमेशा ही हमें अच्छा रिजल्ट मिले. बहुत बार ऐसा होता है कि हमें नेगेटिविटी का सामना करना पड़ता है, हार का सामना करना पड़ता है. बट ही इज सेइंग दैट वी शुड बी रेडी फॉर ईच एंड एवरी काइंड ऑफ फेट. जो भी कुछ हमारे वे में आ रहा है हमें उसके लिए पहले से रेडी होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि हमने कोई काम करा और हम पहले से ही सोच के बैठ जाएं कि इसमें तो हमें 100% सक्सेस मिलनी ही मिलनी है. बिकॉज मेनी टाइम्स इट हैपेंस कि वी डू नॉट गेट सक्सेस एंड देन वी विल बी सैड, वेरी सैड. तो ऐसा हमें नहीं करना है. वी शुड बी रेडी फॉर एनी काइंड ऑफ फेट दैट कम्स थ्रू. ठीक है. Still pursuing, still achieving, learn to labor and to wait. कुछ भी हो लाइफ में, but with a positive attitude, we should be working each and every moment. हमें still pursue करना है, काम करना है, hard work करना है, and still we have to achieve our goal. You must have heard many achievers जो बोलते हैं कि मैंने लाइफ में 10 बार किया, 20 बार किया, मैं फिर भी फेल हो गया, बट मैं करता रहा. Here we can give an example. Poet ने नहीं दिया example, but I am giving you the best example of Thomas Alva Edison. He has done many experiments, thousands, basically 1200 experiments उन्होंने किए थे light electricity बनाने से पहले, bulb बनाने से पहले. And क्या हुआ था? 1200 experiments में he got failed, but still he did not stop and he achieved his goal. उन्होंने जो प्रॉमिस किया था अमेरिका से कि 2 years में आई विल गिव यू लाइट, आई विल गिव यू इलेक्ट्रिसिटी, ही हैड डन इट. सो व्हाट डिड ही डू? ही डिड नॉट स्टॉप एंड ही वाज रेडी एनी काइंड ऑफ फेट दैट केम थ्रू इन हिज लाइफ. ही स्टिल परस्यूड, ही स्टिल अचीव्ड and he waited patiently for his rewards. In his last line also he is saying, learn to labor and to wait. Learn to labor मतलब हमेशा काम करते रहो, हार्ड वर्क करते रहो, एंड टू वेट, एंड वी शुड पेशेंटली, धैर्य के साथ हमें जो भी हमारा रिवॉर्ड है, जो भी उसका फल है, जो भी परिणाम है, उसके लिए हमें वेट करना चाहिए. तो फाइनली व्हाट डिड वी लर्न फ्रॉम दिस पोएम? क्या पढ़ा हमने इस पोएम में? वी हैव लर्न्ड दैट आवर लाइफ इज प्राइसलेस. कैसी है ये? इट इज प्राइसलेस एंड मीनिंगफुल. तो हमें इसको सीरियसली लेना है. इट इज अर्नेस्ट. ही सेड नो, लाइफ इज अर्नेस्ट. वी शुड टेक आवर लाइफ सीरियसली एंड do not waste each and any moment of the life. Always work hard to be a better person. The bottom line is, our today should be better than yesterday. Our tomorrow should be better than today. Moral of the poem. The main theme of the poem is to represent an optimistic view of life. Poet says life is precious. He encourages people to live their lives to the fullest.
The poem is a message to all generations to find work and action that gives them purpose and passion. Again, we should not waste even a single moment of our life. Now let us revise through some questions and their respective answers so that you will get to know about that how much have you understood the poem. Please read them thoroughly on your own. Now try to find out the answers of some more questions like what is the world according to the poet? How can we become a hero? What we should not do according to the poet? Why the phrase dumb cattle has been used in the poem? Best of luck, my dear friends and students. Work hard to be a better person each and every day. Please don't forget the teaching. This is what we have learned from the poem. Thank you. Bye-bye.